Dear students, the concept of present value is not just valuable in the field of financial analysis, rather, it can also be conducted in the fields of mining. Here we are taking an example for the case of gold mining, and we will see that how integration can help us to analyze this situation. Let us see. So we are talking about a function of income earned from the gold mine, and that function is there. So it is telling us that if we do the gold mining in a certain area, we will be getting some returns, and those returns are modeled by this function, and the independent variable is time. So over time, this process is taking place. If money is discounted at 10%, आपको पता है कि हम बात करें ओवर टाइम एनालिसिस की, जिसमें डिस्काउंटिंग जो है हम करते हैं in order to incorporate the concept of time value of money. So when this happens, we have the time period for 20 years. So we have 20 years for which we shall do the analysis. What is the present value of the gold mine? जो gold mine है उसकी present value अब हम निकालेंगे because हमारे पास all the given data is now available. ऑलरेडी नोन ये है कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का एक सर्टेन फार्मूला है जो कि लोअर और अपर लिमिट से मिलके बनता है, जिसमें रिटर्न्स का फंक्शन हम सब्सटीट्यूट करते हैं और डिस्काउंटिंग का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं. सो नाउ वी शैल सी इफ वी हैव ऑल द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू फिल दिस फार्मूला विद इट्स वैल्यूज. हमें ये बताया गया कि 20 इयर्स के लिए गोल्ड माइनिंग की जा रही है. हमें ये बताया गया कि रेवेन्यू की जगह यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो हमने उसे एक डिफरेंट नोटेशन दे दी. हमें ये बताया गया कि डिस्काउंट रेट क्या है, जिसे हम 0.1 लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 10%. हमें ये बताया गया कि हम ये प्रेजेंट वैल्यू इस प्रॉफिट की निकालना चाहते हैं, बिकॉज विदाउट डिस्काउंटिंग इट विल बी एन ओवर एस्टिमेटेड थिंग, जो कि हम प्रेजेंट वैल्यू की थ्योरी में पढ़ते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट किस लिए किया जाता है या डिस्काउंटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं. सो ये है हमारे पास आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, दिस फंक्शन दैट वाज गिवन, जो गोल्ड माइनिंग का फंक्शन है, और ये है वो एक्सपोनेंशियल टर्म जो कि डिस्काउंटिंग के प्रोसेस को इस एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस करवा रही है. सो अगेन दिस इज समथिंग दैट इज वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू योर एक्सपीरियंस. आप इसे इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग द rules of definite integration and rules of integration of exponential functions. So, assuming that you can do easily these things जो आपने पहले भी की हैं, we will come to the numerical results. Again, a few steps जो कि आप कर सकते हैं. ये आ गई हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू जिसके लिए हम ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे. ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गोल्ड माइन, दैट इज इक्वल टू 999.99, that is approximately equal to 1000. So let's interpret this. We can say that the present value of the gold mine that is mined for 20 years, जिसे हमने 20 साल तक माइन किया, तो दैट इज इक्वल टू दिस $1000. सो $1000 इसकी वैल्यू थी और थाउजेंड्स की अंदर इसकी यूनिट्स थी. तो हमने जब इन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स को शामिल किया तो ये 1 मिलियन बन गई. सो एक्चुअली इन ओवरऑल टर्म it is actually $1 million, the value, the present value of the gold mine after the 20 years of gold mining. So here we saw that how we can use integration to do the process of estimation of present value of a gold mine. Thank you.